Namaskar everyone. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So today we are going to revise our chapter 8 birds, right? So open your revision sheet page number 25 and see important notes of this chapter. See, a bird uses its beak to catch and hold food, right? They use their beak to catch their food and hold the food. Beaks also help in building nest. Beaks का वो use किस तरह से करते हैं? They hold their food, they catch their food, and they also use their beaks to building nest, right? Birds have different kinds of beaks because they have different eating habits. Right? So they have different kind of beaks. Birds have 2 feet with 4 toes on each. They have 2 feet and they have 4 toes on each feet, right? See, birds fly with upstroke and downstroke on their wings. They fly with the help of their wings with upstroke and downstroke. है ना? Birds have 3 types of feathers: body feathers, down feathers, and flight feathers, right? They have 3 kinds of feathers. They help the feathers help them to keep their body warm, to fly easily, right? Now see, birds use different kinds of things such as twigs, straws, leaves, threads, wools, cotton, or even pieces of clothes to build their nest. They uses this kind of material to to build their nest, right? Now turn the page number 26. Question number 1. Choose the correct option. First one is, which part of body help a bird to which a bird can catch and eat food? With the help of beaks, right? अभी हमने points में देखा, they use their beaks to catch and hold their food, right? So correct one is beaks. So tick the option C here. Now see the second one. Which of these is true about a goose? Options are broad beak, option B webbed feet, and option C holes in beak, option D all of these. So all these qualities are in a bird goose, right? Goose में ये सारी qualities होती है. They have broad beak, they have webbed feet, they have holes in their beak, right? So take the option D here. Now see the third one. Which of these birds collect stone and pebbles to make their nest on the ground? They make their nest on the ground, right? क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? सी एरिया में रहते हैं, वहाँ पे कोई ट्रीज़ और वगैरह नहीं होते, तो दे मेक देयर नेस्ट on the ground with the help of stones and pebbles, right? Options are woodpecker, penguin, crane, and sparrow. So option B is correct one because penguins live in sea area, right? So tick the option B here. Now see the fourth one. The feathers are found on wings. Wings में जो feathers पाए जाते हैं उन्हें कौन से feathers बोलेंगे? Options are body feathers, option B down feathers, option C flight feathers, and option D none of these. So we found flight feathers on wings because flight feathers are meant to be flying, right? वो flying के लिए ही बने हैं. Now see the fifth one. Which bird use its beak to look for food inside ट्री होल्स में जो फूड होते हैं वो कौन सा बर्ड है जो निकाल के खाता है? तो ऑप्शंस आर हूपो, ऑप्शन बी क्रेन, ऑप्शन सी pigeon, and option D duck. So hoopoe is the right one because they have beak like straw, right? They
stuck into the tree trunk and क्या करते हैं, they suck the nectar, no sorry, they found their food inside the tree holes, right? So it's hoopoe. Now see page number 27, fill in the blanks. Question number 2. First one is birds like blank suck nectar from flowers. फ्लावर से नेक्टर लेते हैं, वो कौन सा बर्ड है? इट्स sunbird, right? So tick the option sunbird and write down in a blank. See the second one. Birds usually have blank feet with blank toes on each. They have 2 feet, right? Write down 2 here and 4 toes on each. हर एक feet में 4 toes होते हैं, 4 toes होते हैं, right? Now see the third one. Flesh birds have blank feet, pointed or hooked. उनके जो feet है वो कैसे होंगे? Hooked, right? So that they can tear the flesh. So tick the option hooked here and write down in a blank. See the fourth one. Water birds have blank that help them push water while swimming. Options are sharp claws and webbed feet. They have webbed feet to swim easily, right? क्योंकि उससे पानी आराम से निकल जाए, right? So tick the option webbed feet here and write down in a blank. Now see the question number 3. Write true or false. First one is a bird uses the wing to build its nest. Wrong. They use their beaks to build their nest, right? So write down F here. Now see the second one. All birds have same kinds of beaks. No, they have different kinds of beaks according to their food habit, right? जो वो food खाते हैं. See the third one. Birds have 3 types of feathers. Yes, it is true. Write down T here. Birds have 3 types of feathers, right? Now see the fourth one. Hummingbird has long and straw-like pointed beaks. Right, this is right thing, right? So write down T here. Now turn the page number 28. Question number 4. Give 2 examples for the following. First one, birds with strong, short and broad beak. ऐसे 2 birds लिखने हैं जिनकी strong, short and broad beak हो. तो options examples of these birds are sparrow and pigeon, right? Second one, birds with webbed feet. Of course, it's duck and goose. Third one, birds with talons. So they are eagle and vulture, right? Fourth one, things that birds use to make nest. They use thread, tings, wool, leaves, cotton, बहुत सारा. तो you have to write down only 2 here, right? मैंने यहाँ पे 4 लिखे. You can write down 2. Any 2 examples here, right? Now see the question number 5. Short question answer. First question is, what is talons? See, यहाँ पे भी birds with talons आया था, right? पर ये question था, what is talons? Talons का मतलब क्या है? तो the flesh eating birds, see eagle and vulture are flesh eating birds, right? They have very sharp and curved claws, are called talons. They have very sharp and curved claws. उनके जो claws होते हैं वो कैसे होते हैं? Curved होते हैं, so that they can tear the flesh easily, right? Pointed नहीं होते. Now see the second one. Why do birds need to make a nest? उनको nest क्यों बनाना पड़ता है? Why they need nest? Why? तो answer is, birds build their nest mostly to lay eggs in them. Mostly they use their nest to lay their eggs, right? It is the nest that their eggs and the chicks stays. ये नेस्ट ही है जहाँ पे उनके चिक्स और जो उनके लेग्स होते हैं दे आर सेफ देयर, राइट? टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फ्लाई. वो उड़ने के लिए रेडी ना हो जाए तब तक वहाँ पे
सेफ रहे, राइट. सो व्हाई डू बर्ड्स नीड टू मेक नेस्ट? Answer is birds build their nest mostly to lay eggs in them. It is the nest that their eggs and their chicks stay till they are old enough to fly, right? Now see the question number 3 on page number 29. What is the difference between flight feathers and down feathers? See, there are three kinds of feathers, right? फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स, है ना. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू राइट डाउन उसमें से जो फ्लाइट फेदर्स और डाउन फेदर्स है उनके यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंसेस लिखने हैं. तो फर्स्टली मैंने जो डाउन फेदर्स है उनके दो डिफरेंस लिखे हैं, फिर फ्लाइट फेदर्स के लिखे हैं, राइट. तो डाउन फेदर्स आर फ्लफी एंड सॉफ्ट. डाउन फेदर्स कैसे होते हैं, फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट होते हैं. दे कीप द बर्ड वार्म. वो जो बॉडी होती है बर्ड की उसे वार्म रखने में हेल्प करते हैं, राइट. नाउ सी फ्लाइट फेदर्स. फ्लाइट फेदर्स आर फाउंड मेनली ऑन द विंग्स एंड दे आर मेंट फॉर फ्लाइंग. वो सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, विंग्स पे, और वो इतने हल्के फुल्के होते हैं. तो वो कहाँ पे होते हैं, दे आर मेनली ऑन विंग्स एंड दे आर मेंट फॉर फ्लाइंग. वो बने ही क्यों है, फ्लाइंग के लिए, राइट. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट वन इज हाउ डू बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स फ्लाई कैसे करते हैं? तो आंसर इज बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ wings. We all know they fly with the help of their wings, right? But कैसे? See, wings are jointed to the body with strong muscles that help them to move. उनके जो wings है वो strong body muscles जो होते हैं उनके साथ joint होती हैं, right? तो उससे क्या हो सके, उनके जो wings है वो strongly move कर सके. A bird flaps its wings both in the upward and downward directions. फिर क्या करते हैं, जो उनके विंग्स है वो फ्लैप करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर और डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे. दिस स्ट्रोक्स आर कॉल्ड अपस्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक रिस्पेक्टिवली. अपस्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अपस्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, ऐसे करके दे फ्लाई, राइट, विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. डन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. Explain how birds take care of their young ones. How birds take care of their young ones? So, answer is the mother bird lay its eggs in its nets and keep them warm until they hatch into young ones. क्या करते हैं, जो मदर बर्ड होती है वो अपने जो एग्स होते हैं उनको क्या करती है, वार्म करती है, गर्म रखती है, राइट. आपने देखा हो अंडे के ऊपर बैठती है कहीं वैसे, है ना. वो ऐसे करके क्या करती है, अपनी बॉडी की गर्मी उसे देती है जिससे अंडे गर्म रहे, ठंडी ना लगे उन्हें, और क्या हो सके, उनसे बच्चे बाहर ना आ जाए, तब तक ये अंडों को वार्म करती है. द फादर बर्ड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एग्स फ्रॉम एनिमीज़. एनिमीज से अपने अपने जो एग्स हैं उनकी हिफाजत कौन करता है, फादर बर्ड, राइट. नाउ सी दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस अंटिल दे लर्न टू फ्लाई एंड सर्च फॉर फूड ऑन देयर ओन. वो तब तक अपने अंडों और अपने बच्चों की हेल्प करते हैं जब तक वो उड़ना ना सीख जाए, राइट, और अपनी फूड की जो सर्च है वो खुद से ना कर पाए, तब तक मदर और फादर दोनों बर्ड्स अपने अंडे और चिक्स की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं. तो हाउ बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. तो आंसर इज द मदर बर्ड ले देयर एग्स in its nest and keep them warm until they hatch into young ones, right. The father bird helps to protect the eggs from enemies and they take care of their young ones until they are learn to fly and search for food on their own. वो खुद से उड़ना और सर्च करना ना सीख जाए तब तक उनके जो मदर फादर है उनकी
हेल्प करते हैं, राइट, ध्यान रखते हैं. नाउ टर्न द पेज नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू स्क्रैचिंग बर्ड डिफर्स फ्रॉम perching birds? What is the meaning of scratching bird and perching birds? और उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें यहाँ पे लिखना है. तो आंसर इज द बर्ड्स दैट यूजेस देयर फीट टू होल्ड ऑन ट्री ब्रांचेस एंड सीट ऑन देम आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स, राइट. पर्चिंग बर्ड्स किसे बोलेंगे? दे यूजेस देयर फीट, वो अपनी फीट यूज़ करते हैं ब्रांचेस या फिर कहीं भी बैठने के लिए. they are called perching birds, उन्हें हम perching birds बोलेंगे. Examples are pigeon, crow, sparrow, these are the perching birds, right. While birds that use their toes to dig the ground and find food are called scratching bird. Scratching bird क्या करते हैं? स्क्रैच करते हैं ग्राउंड को, है ना, डिग करते हैं और उसमें से अपना फूड सर्च करते हैं. इसे हम क्या बोलेंगे? स्क्रैचिंग बर्ड्स. एग्जाम्पल्स आर पीकॉक एंड हैन, राइट. आप हैन को देखना, वो ग्राउंड में ऐसे अपने क्लास से क्या करती रहती है? स्क्रैच करती रहती है टू फाइंड आउट द फूड, राइट. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्रैचिंग एंड पर्चिंग बर्ड? तो the bird that uses their feet to hold on tree branches and sit on them are called perching birds. Examples are pigeon and crow. While bird that uses their toes to dig the ground and find for food are called scratching birds. Examples are peacock and hen. Now see the question number 7. Complete the concept map given below. Feet and class of birds. See, a perching birds, scratching birds, climbing birds and wading birds. उनके feet and class कैसे होते हैं? तो ये बहुत ही ईजी है. पर्चिंग बर्ड्स के फीट्स और क्लास कैसे होते हैं? दे यूज देयर फीट्स एंड क्लास टू होल्ड ऑन ट्री ब्रांचेस, राइट. सो राइट डाउन, होल्ड ऑन टू ट्री branches here. Perching bird. You have to write down uses of feet and claws here. Okay. Now see the scratching birds. Scratching birds use their feet and claws to dig the ground, right? Climbing birds use their feet and claws to climb up and hold on tree, right? When wading birds use their feet and claws to push water while swimming. While they are swimming, they use their feet and claws to push water. Okay, so this is our chapter 8. If you guys have any query, you can contact me. Stay healthy. Take care.